तो हमारे पास ये है मई जून 2021 वेरिएंट 23। ठीक है, मई जून 2021 है, वेरिएंट 23 है। इसका अब हम जो अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो सेकंड केस है। ठीक है, बेल्टेड अप के नाम से, बीयू के नाम से है। सेकंड केस पूरा अटेम्प्ट करेंगे। इसके अंदर अगर मैं क्वेश्चंस देखूं तो क्या है, लिक्विडिटी, फाइनेंस से रिलेटेड है जो अभी हमने पढ़ा नहीं है। इंटरनल ग्रोथ हम पढ़ चुके हैं। टोटल रेवेन्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। एंड समवट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से रिलेटेड बात हो रही है। प्रोसेस इनोवेशन इज रिलेटेड टू ऑपरेशंस। ठीक है, एंड इवैल्यूएट द यूजफुलनेस ऑफ मिन्सबर्ग्स रोल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर बीयू व्हेन रिक्रूटिंग अ न्यू मैनेजर। मिन्सबर्ग वही शुरू में आपको ले जाता है यूनिट आई थिंक 2 के अंदर। ठीक है, इस केस स्टडी को हम स्कैन करेंगे और अटेम्प्ट करेंगे। लेट्स सी क्या क्या है इसके अंदर। Belted Up is a manufacturer of handmade leather belts for clothing. यानी क्या बनाता है, हैंडमेड, स्पेशलाइज्ड है, लेदर बेल्ट्स है फॉर क्लोथिंग। The business makes a range of sizes and color of belts using batch production. Handmade है लेकिन बैच में बनते हैं। The table 2.1 shows some details of BU's best-selling belts. The classic. Classic की कुछ एग्जांपल है। हर बेल्ट हमारा बिकता है $11 का। ठीक है, स्मॉल हमारे कितने बिके हैं 2020 के अंदर 10,000 ब्राउन। इस तरह मीडियम ब्राउन 60,000 बिके हैं, लार्ज ब्राउन 40,000 बिके हैं, ब्लैक स्मॉल 15,000 बिके हैं, मीडियम ब्लैक 80,000 बिके हैं, लार्ज ब्लैक 60,000 बिके हैं। अगर देखा जाए तो ब्लैक की सेल्स कंपेयर टू ब्राउन क्या है, ज्यादा है हर कैटेगरी के अंदर, हर साइज के अंदर। BU has an objective of internal growth. Internal growth का मतलब ये होता है कि अपने ही पैसों से अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना। तो BU has an objective of internal growth. The directors of BU have decided to manufacture a new belt that can be reversed. That can be reversed यानी उल्टा पहनो तो एक कलर, आगे पहनो तो एक कलर, यानी एक ही बेल्ट में दोनों ब्लैक और ब्राउन साथ। This could affect the amount of inventory held by BU and its liquidity. आपको ज्यादा बेल्ट रखनी नहीं पड़ेंगे, एक ही बेल्ट के अंदर दोनों चीजें आ जाएंगी, लेकिन बेल्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। I have a belt जो टू मतलब एक आगे से लेदर और दूसरी साइड जो है प्लेन ब्लैक। हाँ, तो बेसिकली दो चीजें तो दे रहा है लेकिन कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब इन्वेंटरी स्टॉकअप भी कम होगी। डायरेक्टर्स हैव प्रपोज्ड प्रोसेस इनोवेशन सो दैट द न्यू बेल्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन। प्रोसेस इनोवेशन दैट वी नीड टू मेक चेंजेस इन द वे वी मेक थिंग्स ताकि ये नया बेल्ट बन जाए। करंटली वी डू नॉट हैव और वी डू नॉट वर्क इन सच अ कैपेसिटी कि इस तरह का बेल्ट हम बनाए। ओके, द फैक्ट्री मैनेजर हैज बीन प्रमोटेड विद द बिजनेस, सॉरी विद इन द बिजनेस, यानी इंटरनल रिक्रूटमेंट हुई है, नीचे से ऊपर बंदा आया, प्रमोशन हुआ है। एंड अ न्यू फैक्ट्री मैनेजर इज नीडेड। And extract from the job advertisement for his vacant position. उसको तो ऊपर लगा दिया, अब उसकी पोजीशन खाली है, उसके लिए हम एक्सटर्नली रिक्रूट कर रहे हैं। Okay. We are looking for a factory manager to drive the process innovation needed to develop the production of belts. यानी प्रोडक्शन ऑफ बेल्ट्स के ऊपर काम करना है, प्रोसेस इनोवेशन पे काम करना है। The factory manager will manage all the 70 production workers. यानी उसका इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन आ रही है, 70 प्रोडक्टर्स हैं एंड 8 सुपरवाइजर्स हैं। दूसरी बात, वो वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव से ही मिलेगा। The factory manager will also manage the inventory and be responsible for the warehouse operations. यानी उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दी है, लेकिन इस जॉब टाइटल यानी एडवर्टाइजमेंट के अंदर इसके अंदर पर्सन स्पेसिफिकेशन नहीं कि व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, कि क्वालिटी, स्किल, एक्सपीरियंस, नॉलेज क्या क्या होना चाहिए। अच्छा, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जॉब, ये तो वही एक्सट्रैक्ट आ गया हमारे पास। नाउ हमारे पास सवाल है, डिफाइन द टर्म लिक्विडिटी। आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए फॉर 2 मार्क्स। तो लिखते हैं, अभी फाइनेंस का पार्ट है लेकिन पढ़ा नहीं, हम पूरा पेपर ही करेंगे। ओके, सही, पूरा पेपर 2 करेंगे। ओके, लिक्विडिटी is the ability of the business. Liquidity is the ability of the business to pay for its short-term debts. Liquidity is the ability of the business to pay for its short-term debts. और लाइन 15 के अंदर बताया हुआ है, ठीक है। लिक्विडिटी इज द एबिलिटी, हाँ
So हमने क्या बात बताई? Liquidity is the ability of the business to pay for its short-term debts. ठीक है? And to manage liquidity, we need sufficient working capital. Sufficient working capital. The formula to calculate working capital is current assets minus current liabilities. Current assets minus current liabilities. ठीक है, ये एक बात हो गई हमारे पास. अगला पार्ट हमसे पूछ रहा है that explain the term internal growth. Explain the term internal growth. तो let's see क्या होता है इसका. It is also known as organic growth, in which the business expands its current operations with its own resources such as, यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ से लिख देते हैं, such as BU opens up a new production facility with its current resources. Okay. ठीक है, ये हो गया. Yes. But sir, can we like use BU as an example? हाँ हाँ, नहीं इधर है ना BU belted. हाँ. जो केस में वो तो इस्तेमाल कर सकते हो. मतलब short term. हाँ हाँ, ये केस का नाम को आप इस्तेमाल कर सकते हो. Okay. Refer to table 2.1 and other relevant information. Calculate the total revenue from selling the classic belt in 2020. तो पहले रेवेन्यू का फॉर्मूला लिखोगे आप सबसे पहले. Sales. Formula to calculate revenue is what? Revenue equals to price times quantity. Simple आप लिखोगे price times quantity. तो you know that the single belt will sell for what? $11. ठीक है, और आप टोटल आउटपुट को प्लस कर लो ताकि टोटल क्वांटिटी आपके पास आ जाए. जरा करो प्लस. सेल फोन खोल लो, यहीं खोल लो. 60 plus 40 is 100, 110, 125 and 80, so 305 and 365 if I'm not wrong. I think I'm wrong. 265. 265. सही है. तो 11 times 265, जरा आंसर निकालो क्या आता है. 2,915 is our total revenue. लिखो जरा अपने पास. So it's 2.915 million. नहीं, but sir, the formula is Price into quantity. price Into quantity. Okay, that would be 11 multiply with 65. That would be 2,915. Done. ठीक है, चलो मूविंग ऑन. इसका पार्ट सी क्या बोल रहा है? सॉरी, पार्ट बी का सेकंड पार्ट है. एक्सप्लेन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू BU of selling a range of sizes and colors of the classic belt. Simple advantage, simple disadvantage. Additional हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. तो first of all, you write the advantage. The advantage is
The advantage is that with a variety of sizes, The variety of sizes, of sizes. BU BU will be able will be able to cater cater to a greater number of audience, in to a greater number of audience greater number of audience, will be able to cater to a greater number of audience, okay, resulting in resulting in the business the business having having a greater market share greater market share and sales. and sales. Full stop. Okay. अगला क्या लिखेंगे? डिसएडवांटेज. नीचे से लिख दो अगली लाइन से. Okay. The drawback would be as when the business will be dealing with different sizes with different sizes dealing with different sizes, so they may need to hold high levels of inventory, which may increase the storage cost and may affect the liquidity. Okay. ठीक है. Now we are going to move towards the bigger answers. Process innovation. ठीक है. तो analyze two disadvantages to BU of the proposed process innovation. ये जो बेल्ट, एक सिंगल बेल्ट में दोनों साइड्स दे रही है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? तो इसके अंदर पहले हमें की डिफाइनिंग टर्म देखना है. क्या देखना है? Key defining term, which is innovation. Process innovation. Okay. So let's write the definition of it. Okay. Process innovation means to bring in changes and improvements in the production processes such as BU is planning to make a reverse belt, reserve लिख दिया तुमने, reverse belt in which two colors will be incorporated in a single belt not built, single belt, Okay. rather than two different units.
full stop. Okay. अब now हमने इंट्रोडक्शन तो दे दिया. Now they are specifically asking us to analyze two disadvantages. Advantages की बात ही नहीं करनी. आप बिला वजह एडवांटेजेस पे जाओगे, एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा. डिसएडवांटेज लिखो, लेकिन वन लाइनर एडवांटेज लिखनी है तो आप दे सकते हो, उसमें मसला नहीं है. बोला ये खाली वन लाइनर एंड में अगर अपनी एफिशिएंसी दिखानी है बिला वजह की तो कर सकते हो. अगला पैराग्राफ. द ड्रॉबैक to BU would be that the business will need to buy in new equipment, machinery to enable the workers to be able to make such a build and for doing so they may need to move towards capital intensive production towards capital intensive production capital intensive production as mentioned in the case so by doing so they may innovate the process however they may lose their brand image of making handmade belts which may be a point of differentiation okay ये हो गया एक. अगला ड्रॉबैक लिखते हैं. The other drawback would be as the workers are used to the labor intensive process not product, labor intensive process. So all the 70 workers 70 production workers all the 70 workers will require training while some of them
of them who may not be able not be able able to cope up to cope up with the required skill up with the required skill with the required they may they may need to be need to be to be made redundant, redundant, which would be an additional financial burden, which would be an additional financial burden, be an additional financial burden, financial burden burden for the business. for the business. ठीक है, यहां पर हमने प्रोसेस इनोवेशन के दो ड्रॉबैक्स दे दिए. ठीक है, आगे बात करते हैं लास्ट वाले पे, मिन्सबर्ग के ऊपर. इवैल्यूएट द यूजफुलनेस ऑफ मिन्सबर्ग्स रोल ऑफ मैनेजमेंट फॉर BU व्हेन रिक्रूटिंग अ न्यू फैक्ट्री मैनेजर. ठीक है, तो सवाल मुझे ये बोल रहा है कि मिन्सबर्ग्स के रोल्स के फायदे क्या है जब आप न्यू फैक्ट्री मैनेजर रिक्रूट कर रहे हैं. ठीक है, One question is हाँ, एयर कंडीशनड होते हैं, मेजॉरिटी एयर कंडीशनड होते हैं, लेकिन देयर आर सम जिसमें नहीं होता, लेकिन बहुत रेयर है. लेकिन I think यहाँ पर जो आपके पास है ना, क्रीक के पास, उस पर जो DA स्कूल है वहां पर. अभी आपके इलाके, where do you get the center? शादी तो वो तो रमता हो गई और एक उसके पास ये 51 के पास में एंडलूसी वहां पर होता है. चलो आगे देखते हैं. सबसे पहले तो हम बताएंगे मिन्सबर्ग है क्या. हेनरी मिन्सबर्ग, हेनरी मिन्सबर्ग Mintzberg identified 10 managerial roles, 10 managerial roles, an effective manager, roles and effective manager, an effective manager, manager should have and he categorized them, he categorized them into 3 different categories. 3 different categories which are interpersonal, personal, informational, and decisional roles. Roles. Full stop. Okay. Informational and decisional. Recruitment. Next. Recruitment is the process of identifying the need for a particular employee, and then attracting
and then attracting suitable candidates dates for that particular job. Full stop. Okay. So the usefulness of the roles when recruiting a new factory manager would be as the case identifies the manager will need to overlook 70 production workers and 8 supervisors So the manager's ability to handle disturbance may be important as a disturbance handler the manager as a disturbance handler the manager will need to tackle the problem with the new production process as some of the workers may need to be made redundant as some of the workers may need to be made redundant. Therefore, it may create problems such as industrial relations issues. It may create problems such as industrial relation issues, So when the manager has the capability to tackle the issues the production process
process process may not face problems. production process may not face problems. Problems. ठीक है? Mhm. Okay. अगला लिख लेंगे. अब हम 3 पैराग्राफ बनाने हैं ना. एक हमने किधर से उठा लिया, एक हमने उठा लिया डिसीजनल रोल से. ठीक है, एक इंफॉर्मेशन से भी उठा लेते हैं, एक इंटरपर्सनल से भी उठा लेते हैं. ठीक, Okay. तो फिर बात दो करते और हैं. हाँ, खाना कर लो. तो और प्रैक्टिस ही है, हाथ तो अभी से अभी तो सिर्फ एक केस स्टडी है. सही, 2 केस स्टडीज होती हैं. लिखो. ओके. As the factory manager will be also overlooking the inventory and the warehouse therefore according to Mintzberg's rules of management, management the new manager should have effective monitoring skills so he may ensure that the inventory of the belt are not being damaged and are being well taken care of without any delays in the operations process. Okay. अगला लिखो. एक हमारी कहां से आ गई, एक आ गई हमारी इंफॉर्मेशनल रोल से मॉनिटर आ गई, एक डिसीजनल रोल से डिस्टर्बेंस हैंडलर आ गई. अब एक इंटरपर्सनल रोल से बात करते हैं. ठीक है. अच्छा, कैटेगरीज के अंदर से एक ही मिलेगा. 3 कैटेगरीज है ना. ठीक है, अगला पैराग्राफ. द न्यू फैक्ट्री मैनेजर should also be a leader so he can motivate and influence workers to achieve a particular objective or target
as BU has 70 workers. So if the manager does not have leadership skills, so does not have leadership skills, so it may affect the operations process resulting in a decline in efficiency and productivity. अगला पैराग्राफ. So Henry Mintzberg's roles will enable to recruit the right manager needed will क्या लिखा हमने? So Henry Mintzberg's roles will enable to recruit the right manager needed for the operations process. However, for an effective recruitment, BU will also need to consider other quantitative and qualitative elements. तो यहाँ पर हमने मई जून 21-23 का सेकंड केस कंप्लीट अटेम्प्ट करा. ठीक है, तो उसको करते हैं एलिमेंट्स, इसको करते हैं बंद.